So, welcome to the Literary Insights of Let's Inspire Bihar, a talk on literature, reading, writing, and everything literary. So, today we have with us an esteemed guest, Suhail Mathur, an award winning and best selling author of several books, and a premier literary agent, motivational speaker, TEDx speaker, and a person who wears multiple hats and balances them all with efficiency, proficiency, and mastery. Thank So, welcome, Suhail, and thank you for your precious time today. And also, we have with us Nitish Raj joining us, editor in chief, The Literary Mirror. So, welcome, both of you. Welcome to the show. Thank you so much. Thank you, Jyoti. It's a pleasure. Thank you, Nitish, for having me over. Looking forward to a very invigorating and exciting conversation. Thank you so much. So, without further delay, let's just begin and shoot out all the questions that we have ready for you because we want to know so much from your expertise and experience. So, you have been an accomplished author of a particular genre, especially, and also venturing into several other genres. And you are a premier literary agent who has run his business for several years now and who has extensive experience and knowledge in the domain. And you have been the festival director of the largest and longest online literature festival, creating an impact in the literary world. So, how do you manage and balance all these roles and responsibilities along with maintaining your creativity and passion for writing? Thank you so much for that question, Jyoti. I think it's a very important question, but I think as anyone, including yourself in the field of creativity, will know that, when you have passion and something comes naturally to you, it never seems like work and you're always able to take out time for it. I think one of the things that I always felt was that when I was, I'm by qualification, I'm a lawyer, and I graduated from the National University in Delhi, and I was working at one of India's biggest law firms. So when I decided to make the full-time shift from, the law firm to the literary agency, it wasn't as if the working hours were getting reduced. So as most people will tell you in corporate law firms, the working hours are crazy. Like you'll have to probably work till 3 or 4 in the night and then come back to office at 8 in the morning again. And sometimes even earlier because those are the things that have happened with me. But when I made the shift, there was no change in my working hours. I still remember that I used to, sleep at times at 4 o'clock and then, get up at 8 in the morning and resume work from there. But the key difference was that the legal work seemed like work. The literary work did not seem like work. It seemed like something interesting. आपका और मन करता है हम थोड़ा और पढ़ें आज किसने स्क्रिप्ट भेजी है what is this book like what is the story behind it so it's creative so whether you're writing something or you're reading something you're analyzing something आप cover बना रहे हैं आप trailer design कर रहे हैं you're making a pitch to a film producer all those things are creative so the point is that when it comes to creativity and if creativity is something that drives you you'll always be able to take out time. So you mentioned over here the festival director of the largest and longest literary festival in India. And I must tell you the story behind it because that's how ideas are born. So it was the first wave of COVID, and all of us were at home. This was somewhere in uh, end April to mid May. When we were just sitting, and I thought that everyone is in such a difficult situation. People are demoralized, and nobody can go out physically. Right. So, what better an opportunity to get all authors, young, old, best-selling, debuting together on one platform so that all their readers and all literary enthusiasts can see them from the comfort of their home. Because in any case, everyone is at home. Nobody is doing anything. We're in a situation. So this is something that can be not only entertaining, but it can also be enriching for the mind. And that's how the idea came about. And I remember that initially we were having a lot of difficulties because at that point of time, I mean, we are recording the meeting on Zoom right now, right? But at that point of time,
how many members can join a Zoom meeting, for how long can Zoom record, what do you need to have a premier subscription or not, all those things people did not know, because it was like, I mean, 2020, and all those kind of things were very nascent. Right. And we were trying other platforms also. So we were trying and doing this. And what happened was that we had announced the festival, and from Monday, our festival was to take off. From that one particular Monday, it was to take off. And we were on Friday night, and we were still figuring out, how to record or what to do. And there were a lot of our authors. So all the authors also joined in. So हमारे जो banners बन रहे थे वो हमारे 2-3 authors थे, banners बना रहे थे. And क्योंकि volume इतनी ज़्यादा थी at that point of time, I think some 705 authors participated in it. Right. And we actually got 705 people on board for people to see that there were those 705 people participating. So it was a festival which had 105 sessions or something, and it went on for 8 days non-stop. Wow. Started at 10 in the morning, went up till 9 in the night. But the point that I'm trying to make over here is it was Friday night, and we did not know how the issue will be resolved. And one of my authors, obviously in his wisdom and good spirits, told me that, Suhail, let's do one thing, because it's getting very difficult. Let's just get your top authors to do an interaction and let that be it. Okay, because people want to hear these people in any case. So I told them that, that's not the point. The point is to ensure that people who are writing their first book, or who have just written their first book, also get an opportunity to sit with you on the same platform. Not only speak alongside you, but also soak in words of wisdom that you are speaking. So it's a great endeavor. And 1 minute लगता है. Basically, my thought was 1 minute लगता है टेक्नोलॉजी को सीखने में. आपने वो सीख ली, and then you will be good to go. And trust me, that is precisely what happened. We had this conversation on Friday night at 10 o'clock after multiple difficulties. And at 11 in the night, someone was able to crack the code that, oh, this is how you have to record. These many people can be brought in a conversation, and we were set. And our event started, and it continued without a glitch till the next Monday. So all these things happen if you are creative. Right. So our creativity की जेलसी कहाँ से आती है वो आपको भी पता है, वो यहाँ से आती है. Right. So many times I was working with one of India's leading entertainment channels. I was working with the Z Network, and I was working with one of the channels over there called Big Magic, which is a very popular channel, especially in the kids segment in tier 2, tier 3 areas in the country. And whenever we used to have meetings and pointers were discussed, it so happened that one day my boss asked me, Suhail, we've discussed so many things. बाकी लोग नोटपैड में लिख रहे थे, so they asked me that आप नोटपैड नहीं लाए हो, कहाँ स्टोर कर रहे हो? So I told them मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ. That is better and more competent than any notepad, any diary, any pen or paper. This is your biggest friend, and this is the source of all creativity. So if you have creativity, you will figure out time to do whatever you have to, and you will not only find time, but you'll also enjoy doing it. Right. That's wonderful. Thank you for that great insight. And since you have been discussing about this literary festival, so I'll continue my next query on that. So, what are your thoughts and insights about literary festivals in India? Because as we see, they are mushrooming. So, what are your thoughts on that? My thoughts on literary festivals after having attended so many would be that I think it's a great platform for people to meet, interact, and stamp their authority as experts in their respective fields. It's become very important in a way it's not necessary, but it's become important for people to go to literary festivals, to be seen, to be known about, because there's so many books that are coming out in the country. But how do publishers get to know you? How do authors get to know you? How do you speak? So that's how it helps, And I remember there was this Lit Fest that was happening in Gurgaon, and I just come out with my first book, and I happened to get the contact of the lady, and I spoke to her. She invited me for a session. The session was over, and everybody loved. The feedback that I got was that everyone loved what I spoke, and because it resonated with them. But the learning for me was that the lady came to me and she told me that
अरे सुहेल, इट वाज फंटास्टिक। मेरे को पता नहीं लग रहा था यार, फोन पे तो कोई बच्चा सा लग रहा है, कैसे बोलेगा एंड दिस एंड दैट। सो आई मीन ऑब्वियसली इट वाज लाइक 10 years ago, बट Right. द पॉइंट इज दैट फोन पे लग रहा था बच्चा सा है, बट जब Hmm. आके आपने बात करी तो लोगों को पता लग गया कि हाँ, यू Hmm. कैन स्पीक सेंस। सो अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो शायद पता नहीं लगता। Right. राइट, सो Right. इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी नहीं है। काम तो मैं Hmm. फिर भी अच्छा कर ही रहा, बट Hmm. इंपॉर्टेंट है। दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज literary festivals. If you're going for literary festivals, go with the purpose, as I said, of interacting with people and knowing them and conveying who you are a little better. If you feel that a lot of work will happen at literary festivals, that's not going to happen, unfortunately. Hmm. Okay. I haven't really seen much of work happening that, prospective authors have actually signed deals at literary Hmm. festivals, or I have Hmm. been to multiple literary festivals. If you were to ask me what my conversion rate from a literary festival to an actual author might be in so many years across so many festivals, probably one or two. Yes, the only good thing that happened was that I went to one such festival where I met an author of a particular publishing house, one of Hmm. India's topmost publishing houses, who put me in touch with the CEO of that publishing house. Through that contact, I have probably done 250 plus books with them till date. But Oh. so मतलब अगर आप indirectly उसको देखना चाहें, Hmm. but directly उतना नहीं होता है. Okay. So my sole purpose, see, when you're going in the capacity of an author, Hmm. then it is about self promotion. Hmm. You have to tell about your book, you have to tell what you're writing, who you are. When you're going in the capacity of a literary agent, it is about work. Hmm. Self promotion की need नहीं है. People know you. Hmm. मतलब you Hmm. spend time in the industry, people know you. Right. So that is not needed. It's about work. So अगर work होता है तो great है, because I'll tell you problem क्या होती है ज्योति, that if even if you're getting say 50 or 60 emails a day, I'm just taking an Hmm. average Hmm. estimate, Hmm. ठीक है, और आप अटेंड करने जा रहे हैं 3 दिन का लिटरेचर Hmm. फेस्टिवल, राइट, Hmm. तो आप एक Hmm. दिन पहले पैकिंग वैकिंग करेंगे, आप फ्लाइट Hmm. लेंगे अपनी पहुंचने के लिए, और एक दिन बाद आप घर पहुंचेंगे, ठीक है, तो आपके बेसिकली 5 दिन चले गए। उस 5 दिन के अंदर 60 के हिसाब से 300 emails आर ऑलरेडी देयर। Hmm. तो आप नेक्स्ट डे बैठेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो उस दिन और 60 आएंगी। तो ऐसा नहीं है Right. कि आप एक दिन में 300 कर लेंगे। Right. तो टेक्निकली Right. उस वर्क को बैलेंस करने के लिए आपको 10 दिन और लगते हैं या एक हफ्ता और लगता है। सो Right. द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क इज हाउ मेनी कैन यू गो टू, हाउ मेनी शुड Hmm. यू गो टू, Hmm. बिकॉज योर रोल्स चेंज। फॉर एन ऑथर इट्स ग्रेट, उनको नहीं आ रही 60 Hmm. 80 emails वर्क रिलेटेड, सो वो Right. जा सकते हैं। Right. Right. बट आई हैव टू एट माई एंड सी, बिकॉज दी अच्छा बहुत लगता है कि किसी ने इनवाइट किया है, सबसे पहली चीज, राइट, इट्स Hmm. ग्रेट, इट्स अ ग्रेट बूस्ट टू द ईगो, and it feels that someone has recognized your work, so that's great. Hmm. But at times you also have to see it practically, because Hmm. ऑथर को नहीं पता ना कि मैं इवेंट के लिए जा रहा हूँ, वो तो मुझे सुबह मैसेज करेगा ही, हे व्हाट्स द Hmm. अपडेट ऑन माय बुक, Hmm. व्हेन विल आई गेट द कवर। Right. Right. ठीक है, तो मैं Right. उसको ये नहीं बोल सकता यार अभी मैं 5 दिन के Right. लिए बाहर हूँ। तो मतलब Right. बोल सकता हूँ, लेकिन मतलब फिर वो Right. होता है कि अरे यार Yes. वेट हो गई, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो Hmm. वो एक दूसरा एस्पेक्ट है उसका। Hmm. बट आई फील दैट जितने ज्यादा लिटरेरी फेस्टिवल्स हों और हो भी रहे हैं, उतना Hmm. अच्छा है, उतना अच्छा है, बिकॉज यू कैन नॉट कर्ब क्रिएटिविटी, you Hmm. know and there is no one person who will say that, oh, this person is creative and this person is not creative। नहीं, किसी ने भी किताब की है, कोई Hmm. पब्लिशर है, कोई लिटरेरी एजेंट है, कोई ऑथर है, कोई कवर डिजाइनर है, कोई एडिटर है, सब क्रिएटिव है। Everyone is adding to creativity. So as long as many people give opportunities, like you and I were having a conversation about Right. something that you are planning to do, that's great, Right. because it's not only people from other states who are coming to that festival or will come, but it's also about promoting indigenous talent, Right. who Right. probably may or may not get an opportunity otherwise, but your platform Right. is giving them an opportunity. Right. So that's how they come into the mainstream. And my last thought on it is that it is a double-edged sword, but I think, and I've said it earlier also, that the star or the stars of literary festivals have to be authors, publishers, agents, designers, editors, and Hmm. not Bollywood celebrities. Hmm. बॉलीवुड सेलिब्रिटी अगर आपका लिटरेरी फेस्टिवल का यूएसपी है, Hmm. तो हर फिल्म फेयर अवार्ड का जो यूएसपी है वो Hmm. ऑथर को होना चाहिए, Wow. टू बैलेंस द इंडस्ट्री। अगर अगर लिटरेरी फंक्शन जो है वो
एक्टर चला रहा है तो फिल्म अवार्ड को ऑथर को चलाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। वो नहीं होता है। बट ये है, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। आई मीन सी, व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू इज हाउ थिंग्स शुड बी। बट इफ यू स्पीक टू अ लिट फेस्ट ऑर्गेनाइजर, वो बोलेंगे कि हमको तो फंड्स ही तब मिलेंगे जब हम इन एक्टर्स के नाम देंगे, या हमें स्पॉन्सर्स ही तब मिलेंगे, और द क्राउड्स विल कम टू हियर द ऑथर्स by default because they've actually come to listen to someone. I'll tell you a very funny incident. So I'd gone for a literary festival, एंड वहां पर एक, अब मैं तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, मैं नाम के साथ ही बताता हूँ हर चीज, बट यहाँ पर मैं इसलिए नाम नहीं ले सकता क्योंकि जो आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं ले सकता। सो एक फेस्टिवल था और वहां पर एक बॉलीवुड एक्टर आए हुए थे जो वहां पर जनरली बात कर रहे थे, अबाउट, कोई उन्होंने बुक नहीं लिखी है, बट ही वाज जस्ट जनरली टॉकिंग अबाउट व्हाटएवर, बिकॉज ही मेड सम, आई थिंक, इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टेट एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स ही डन। एंड इमीडिएटली आफ्टर हिज सेशन एक 2 मिनट का बुक लॉन्च था जो उनको करना था, ऑफ अ बुक विच वाज रिटन बाय वेरी प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर हु राइट्स mythology mostly. So what happened, his session got over, and it wasn't as if like the actor is very good, but he's not like a Khan or a Bachchan or whatever, not like a blockbuster star, but a good star still. उनका सेशन खत्म हुआ, and he very kindly came up and he held the book in hand to speak about it. But what happened was that he was mobbed on stage. He was mobbed on stage. So the audience went up on stage because they saw कि सेशन खत्म हो गया, this is an opportunity sir, autograph sir, photograph. और वो जो ऑथर थे, जो कि लिटरेरी इंडस्ट्री में बहुत वेल नोन फिगर हैं, और अपने सेल्फ एस्टीम में भी वो बहुत अपने आप को उस पोजीशन पे रखते होंगे, रखना भी चाहिए। For him it was a major shock that what is happening, because I saw, and my allegiance is always to the author, right? Because I was sitting in the audience and I saw that ये auditorium का podium है, और इतना परसेंट एक्टर और ऑडियंस से भरा, और वो जिसकी बुक का लॉन्च था वो यहाँ पे अकेले कहीं खड़ा हुआ था, वो जना। सो हुआ क्या कि उन्होंने फाइनली बोला ऑर्गेनाइजर को कि नहीं नहीं, रहने दीजिए, लेट्स कैंसिल द लॉन्च बिकॉज इन एनी केस नोबडी इज पेइंग इंटरेस्ट। तो उन एक्टर ने फिर भी उसको लॉन्च किया, 2-5 बातें बोली बुक के बारे में, काफी अच्छे सराहना की उन्होंने। बट एक लर्निंग थी कि इतने बड़े ऑथर, when he was standing with an actor, this was what happened. But I'll give you a counter to that also. I was at another literary festival, and I met a director. And he was a very sweet person, very nice person. And he, from his posts and all, you will figure out that he likes reading books, and he's promoted it. So एक वो भी चीज मुझे अच्छी लगी। सो उनका जो रूम था ना, मेरे रूम के बिल्कुल ऑपोजिट था, बिल्कुल ऑपोजिट। एंड तो 2-3 बार हमारी वैसी ही इंटरेक्शंस हो गई, बिकॉज you're traveling or गोइंग समवेयर इन, बम्प इनटू वन अनदर। एंड उन्होंने मेरे 2-3 ऑथर्स की किताबें पहले से पढ़ रखी थी, सो एक पॉइंट वाज ऑलरेडी देयर दैट दे न्यू। So I spoke to him. I said that let's connect and let's sit, if you would be interested in book adaptations. So we can sit, brainstorm, chat, chill, and I'll tell you about adaptations. He said, "हाँ, great idea, yeah, let's do it. कल सुबह बैठते हैं, ब्रेकफास्ट पे साथ में बैठते हैं, and we will discuss this." ठीक है। So हम लोग गए ब्रेकफास्ट पे, मतलब मैं अपने ब्रेकफास्ट पे गया, तो वहां पर वो होंगे नहीं होंगे वो सेकेंडरी चीज है, मतलब I didn't time it or something. So I went. So then first he wasn't there, then he came, but he was surrounded by some 5-6, अच्छा अभी फिल्म वालों के साथ बहुत सारे yes men भी घूमते हैं, ठीक है, जिसमें तो वो 5-6 लोगों का एक सर्कल होता ही होता है। तो वो वहां पे बैठे थे, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज उस जने का जो माइंडसेट है वो वर्क रिलेटेड नहीं, फन रिलेटेड है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। सो आई मेट हिम, ही सेड, हाँ यार अभी तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ कहीं बाहर, बट शाम को बैठते हैं, लेट्स सिट एट अराउंड 6 o'clock or so and we'll discuss. So I told him, okay, but I'm leaving because I had to go somewhere else from there. So he said, नहीं 6 o'clock तक मैं आ जाऊंगा. It so happened that I got late and I reached by around 7:15, 7:30, and I was taking my bags and all. So I checked. He had still not come back from wherever he had gone. Okay, and at that point of time मेरा एक author था जो
स्पेशली उस रात रुका बिकॉज उसको उस डायरेक्टर से मिलके अपनी बुक की कहानी सुनानी थी. But I told him that I'm going because of two things. So the thing is, so I left. So that guy came to me, my author, and he said that I told my mother that Suhail has left. So my mother said, "Arey yaar, how big is Suhail and his literary agency? उन लोगों ने डायरेक्टर को मना कर दिया." मैंने उन्हें बोला, मैंने डायरेक्टर को मना नहीं किया. मैं डायरेक्टर के पास 3 बार गया अपने आप टू हैव अ डिस्कशन. देखिए, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट व्हेनेवर एन ऑथर गोज और व्हेनेवर यू नो एन ऑथर मीट्स अ पर्सन फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, वो अपने आप को खुद नीचे कर लेते हैं. तो क्यों करना है? एक्टिंग भी एक क्रिएटिव फील्ड है, राइटिंग भी एक क्रिएटिव फील्ड है. इक्वल रखिए आप अपने आप को. तो मैं तो इक्वल रख के चलता हूँ. ठीक है. तो मैंने उनसे पूछा. अब पॉइंट बहुत सिंपल है. That person had still not come back, right? So like I told you the other day, if a book deal happens, the author is making something in lakhs. If the book deal happens and it is taken up by a OTT, the director producer will make in crores. So if they are not interested in making money or reading, then why should I force someone? Number one. Secondly, मेरे पास उनका नंबर और ईमेल आईडी पहले से थी, तो अगर वो सामने नहीं भी मिल रहा है, I can always send it out. Thirdly, the point is very simple. जब उन्होंने कहा ना how big, so big and small का ना individual is never a big and small. It is the collective that makes it big or small. Right. So if you were to ask, are we one of the top players in the Indian literary agencies these days? The answer is yes. Is that person one of India's topmost film directors these days, on the top 10 film directors? Probably not. Okay. So who is doing whom a favor here? It is very important to know. And why we are where we are is not because of me, but because of our talented authors. कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं. तो मैं सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मैं उन लोगों के लिए उन्हीं से उनके लिए तो बात करने जा रहा था ना. मैं अपना थोड़ी कुछ पर्सनल बात कर रहा हूँ. सो उन लोगों की भी डिसरिस्पेक्ट है. सो आपको इक्वल रखना पड़ेगा. और अगर वो इक्वालिटी नहीं आती तो प्रॉब्लम है. वही ऑथर जो था, अब मैं आपको एग्जांपल, इसमें मैं नाम बता देता हूँ आपको, जो मुझे थोड़ा ऑड लगा. अभी बिग बॉस में शायद आए भी हुए हैं. मेरे को एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम. सम जीशान कादरी या कुछ नाम है शायद उनका. वो बिग बॉस में आए हैं. गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी थे वो. सो वो मेरे ऑथर जो थे, मुझे फनी ये लगा कि वो गए जीशान के पास. वो दोनों फेस्टिवल में स्पीकर है. ठीक है, दोनों स्पीकर है फेस्टिवल में, तो इक्वालिटी है. तो मेरे ख्याल से इवेंट खत्म हुआ तो दिस ऑथर ऑफ माइन वेंट एंड ही गेव his book, which was doing very well, to Zishan, and he said that ये मेरी बुक है साइन वाइन की, एंड आप ये रखिए. एंड आई थिंक एक्टिंग के साथ साथ वो कभी कुछ डायरेक्शन या कुछ भी करते हैं. तो एक उनको, मेरे ऑथर को थोड़ी उम्मीद बन गई दैट ओके मे बी दिस इज समथिंग दैट आई कुड गेट इन एवी डील. सो ही सेड दैट कैन आई आल्सो हैव योर नंबर. See, that's fair enough, right? I mean, if I am there at a platform, and 99% times people will give it because you are not an autograph hunter. Right. So उन्होंने बोला आप अपना नंबर किताब के ऊपर लिख दीजिए. मेरे पास जब समय होगा और अगर इच्छा होगी तो मैं आपको फोन करूंगा. ठीक है. तो उसने जब मुझे बताया, मैंने कहा करवा ली बेइज्जती करा के आ गए तो अपनी. ठीक है. तो मतलब यही है कि मतलब अगेन इट्स नॉट लाइक अ शाहरुख खान has said that you write your number, I will call you up. Right. It is not, or an Amitabh or Mr. Amitabh Bachchan is saying give me a number. True. Yes, Mr. Kadri is creative, but so is the author. तो मतलब ये क्यों माइंड में है कि भाई मैं हूँ सेलिब्रिटी और तुम, वो फर्क हटाना बहुत जरूरी है ऑथर के माइंड से भी. और एक्टर के माइंड में तो चलिए होगा क्योंकि वो एक्टर हैं, उनकी एडुलेशन लेवल बहुत अलग है. लेकिन उसी चक्कर में ऑथर अपने आप को समझने लगता है कि हाँ यार मैं नीचे हूँ. नहीं हो इक्वल हो. जब तक अपने आप को इक्वल नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा. सो दैट इज व्हाट वी टेंड टू प्रोपोगेट.
That's such a positive thought, Hmm. and that's so reassuring and assuring for writers, because लिटरेचर के इवेंट में भी राइटर्स को नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो आखिर कहाँ करेंगे, इन बिल्कुल। already so many disappointments going on. So thank you for that, and thank you for being that voice for authors and making them feel like stars. So we really owe to people like you, and thank you for थैंक यू, that. And थैंक since यू ज्योति। you discussed about passion, हाँ so जी। that brings me to my another query. जी। कि being an alumni of National Law University हम्म। and having a career in law, as you mentioned, या। उसके बाद then you followed your passion for writing. So what would your advice be for aspiring writers about taking writing as full-time profession instead of just pursuing it as a passion? Sure. So when I wrote my first book, I was still in Hmm. college. I Mhm. wrote The Bhairav Putras while I was Yeah. in the final Yeah. year at National Law University, Delhi. Hmm. Hmm. Actually, I was not in the final year when I wrote it. It Hmm. released when I was in the final year. So I'd Okay. obviously written it a couple of Right. years ago. Right. But see, my advice is very simple. I am a very practical person. Hmm. So I went into it full time, not as an author, but as a Hmm. literary agent, Hmm. technically, Hmm. right? Hmm. So that is volume, basically, if you're Right. doing good work. Because Right. देखिए, उस time पे तो Hmm. we had a few deals and all, but obviously we did not have the volume of work that Hmm. we have accumulated over the years. जैसे जैसे Hmm. आप आगे बढ़ते Hmm. हैं और लोग जुड़ते जाते हैं, but उस टाइम पे आपको नहीं पता होता ना कि इतने Hmm. सारे लोग जुड़ेंगे. That you don't Right. know, because at the end of the day we are agents, not astrologers. So the point is that it is very important to take any decision that you take keeping the financial aspect in mind, because ये Hmm. passion है और अच्छा लगता है करना, वो सब ठीक है अपनी Right. जगह. Hmm. बट अगर आप उसको पैशन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, देन इट्स ओके. बट इफ यू आर Hmm. मेकिंग इट फुल टाइम, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, रियलाइज दैट Hmm. समटाइम्स थिंग्स विल और इवेंचुअली कम टू अ पॉइंट वेयर Hmm. your sustenance might be at stake. So you have to Right. figure out that, okay, this is what it is. So I remember that I figured out that, okay, if I'm able to do even say this much work, Hmm. I should be in a decent space. So I should work Hmm. towards my goal. Now that is what I Right. thought. Right. Again, it is the blessings of the Almighty. It is the support of the authors, and it is the support of the publishers that made it come true. वरना चाहने से क्या होता है? सिर्फ मेहनत तो Right. सभी करते हैं, मेहनत सब करते हैं. आई एम Right. श्योर जितनी मेहनत शाहरुख खान करते हैं उतनी मेहनत कुछ और एक्टर्स भी करते होंगे, बट हर कोई शाहरुख खान की सक्सेस Right. नहीं लेता. क्यों? Right. क्योंकि वहां पे हार्डवर्क के साथ जो लक है वो थोड़ी Hmm. और ज्यादा होती है. हार्डवर्क सब करते Hmm. हैं. Even if even if Mr. Khan does say 10% more hard work, his luck is much more than, say, I mean, Right. any other person, because he's way above True. anyone. So I'm just giving an example over there. तो Hmm. ये एक चीज है. Hmm. There are authors who reach out to me and say that we're going to do this full time. So I Hmm. advise them, don't do it full time, because it's very difficult to sustain yourself in India as an author. Hmm. मैं एजेंसी पे भी आऊंगा. इनफैक्ट मैं Hmm. आज ही किसी से बात कर रहा था. आई मस्ट गिव यू एन एग्जांपल अबाउट दिस. Hmm. ओके. Hmm. Hmm. So the thing is that I said, don't do that. Write if you want appreciation. Write if you want recognition. Write if Hmm. you want acknowledgement. Write if you Hmm. want to attend literary festivals. Hmm. Don't write for money, because there is no money Hmm. यार. There is no Right. money. ठीक है. True. True. 300 रुपए का तो आपका प्रोडक्ट है. ठीक है. Hmm. Hmm. तो आप मुझे ये काउंटर दें कि तो क्या हुआ, साबुन भी तो बिकता है, वो तो 10 रुपए का होता है. तो भाई साबुन Hmm. आपको हर दिन चाहिए होगा या हर हफ्ते खरीदना होगा. बुक तो आप Hmm. लाइफ में बस एक बार खरीदोगे. अगर आप बुक Right. पढ़ते हो, नहाते तो सब हैं, True. पर बुक तो Right. कुछ ही लोग पढ़ते हैं. Right. दैट्स वन. True. ठीक है. True. True. दूसरी चीज ये कि अगर आप बोलेंगे कि भाई तो क्या हुआ, फिल्म की टिकट भी 299 रुपीज की मिलती है, Right. बट फिल्म का स्केल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं आप, कितने लोग जा Right. रहे हैं उसको देखने के लिए. बुक True. की प्रमोशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री. So Right. in the industry is of small margins. So Hmm. the way writers can probably sustain themselves is if they are able to sell book to screen adaptations, or they're Right. writing for screen, but that is also not very rosy. Not Because true. see, what is the guarantee that your book will be taken up? 90% Hmm. of AV deals that happen are on option basis, and they eventually fizzle out. Okay. Right. Even if you're writer for screen is a very unforgiving space. It takes years and years for a project to get greenlit, Right. then years for it to get shot, then years for it to get edited.
और फिर वो आता है, और अगर फ्लॉप हो गई तो आपकी इतनी साल की मेहनत किसी ने देखी नहीं. Correct. That is how it is. There are so many films that come, and there are so many series that come. We're not talking about every series. We're talking about, say, one series or two series here or there. मेहनत तो सबने की है. So वो point है. But अब मैं agencies पे भी आ जाता हूँ. I think the smartest people, in all honesty, I say this, the smartest people in the entire literary scenario are book marketers. They are the smartest. Okay. There was this one person. I am just giving an example. There was this one lady I knew, and she was doing some interviews with authors, and she used to charge whatever amount it was. I don't want to get into the amounts per se, but it wasn't very high, but it was okay. And the interviews used to be like, say, 15 minutes, 20-minute interviews. And what I realized, so the thing was that कुछ 20-25K या कुछ वो ले रही थी. वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा मुझे अपना पॉइंट सब्सटैंशिएट करना. सो वैसे अमाउंट ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है. और उनकी रीच भी थी, जो भी था. बट आई वाज सो वन ऑफ माय ऑथर्स गॉट दैट डन. Okay, and I was just telling my wife that, look, first a script has to come to me. Then when the submission has been made, I have to make a pitch to them, in terms of uh, why they should work with us. उसके बाद मैं उनके साथ डॉक्यूमेंट्स पे काम करता हूँ, एडिट्स पे काम करता हूँ, पिच करता हूँ. तो 6-8 महीने, 1 साल लग जाता है. फिर पब्लिशर उस बुक को लेगा, वो 1 साल में रिलीज करेगा. तो 2 साल लग गए बेसिकली. एंड यू आर बीइंग जज्ड, ऑन योर परफॉर्मेंस, कि कहाँ डील मिली, कहाँ नहीं मिली, ठीक है. That person, the other person, in 15 minutes has made more money than I've made in 2 years without being judged. Without being judged. Without being judged. मतलब उनके प्लेटफॉर्म पे 100 कमेंट आए, लेकिन उस 100 में से 98 कमेंट्स थे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, योर हेयर आर सो नाइस, योर मेकअप इज सो गुड, ठीक है. सो जो कि वैसे ही होता है, यू नो हाउ आर सोशल मीडिया वर्क्स. सो आई वाज लाइक, यार मतलब 2 साल में, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा लगा कि 2 साल में यार मैंने जितना उस बुक पे वर्क करके, इतना हार्डवर्क लगा के नहीं अर्न किया. सी, आई एम डूइंग वर्क बिकॉज आई लाइक द बुक, बट इट्स समवेयर जस्ट अ रियलाइजेशन दैट यार दिस पर्सन हैज आउटडन यू इन 15 मिनट्स. तुम 2 साल में भी नहीं कर पाए वो चीज. सो ये जो पॉइंट्स है ना, दैट आई मीन, तो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और आपको अच्छा काम करना पड़ता है. और अच्छा काम, और मैं यही मानता हूँ कि बहुत अच्छी चीज 3 इडियट्स में बोली थी कि आप उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बोला था कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागिए, सक्सेस आपको मिलेगी, राइट. सो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज, दैट यू डू गुड वर्क, एंड देन पीपल विल इवेंचुअली join hands with you. Every day you have to prove yourself. Every day is a new battle. In fact, whenever I get a book deal, I don't sit and celebrate that. Okay. My thing is that if I get a book deal, I will tell my author, yes, I'll be very happy because I've gotten the deal. Once I've gotten that deal, 1 hour, half an hour, 1 hour after that, my thought is, चलो ये हो गया, what next? अभी इतनी और बची हैं, उनको करा. तो जब उनका नंबर आता है तो अब और लोग जुड़ चुके होते हैं. सो आप अपने लॉरेल्स पे यहाँ पे रेस्ट नहीं कर सकते. एवरी डे इज a new battle, every day is a new struggle, and it is very important that you know that. मतलब I have absolutely no inflated ego about that, oh I am this, I am that. No. आपने इस इंटरव्यू में ही कुछ सुना होगा, वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं genuinely मानता हूँ that the authors, the publishers are our true companions. Without their support, it's nothing, right? So I always give credit to all of them, and the point is that अगर आप बैठ जाएंगे बोल के कि हाँ भाई मैंने तो इतनी सारी 1600 किताबें कर दी हैं, तो हो सकता है फिर आप 1600 पे ही रुक जाए. हाँ, वो एक अमेजिंग नंबर है जो शायद अभी तक किसी ने छुआ नहीं है. लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है आप मुझे 2-3 साल बाद मिले और वो नंबर 3000 हो चुका, क्या पता, या 5 साल बाद मिले 3000 हो चुका. सो वो चीज होती है. सो इट्स द कांस्टेंट अर्ज, और ये कांस्टेंट अर्ज जो है ना, ये वहीं से आती है कि आपको कुछ क्रिएटिव करना है. आपको कुछ क्रिएटिव करना है. जस्ट बिकॉज उदित नारायण हैज बीन सिंगिंग फॉर 30 years डज नॉट मीन दैट ही विल से कि नहीं यार अब मेरे को गाने का मन नहीं है. वो अभी भी शोज करेंगे, उनको कुछ नया गाना है, उनको अपनी क्राफ्ट होन करनी है.
So creativity है, and I think every day you need to prove yourself. That's quite enlightening. Thank you. And thank you for being so humble about everything. And Thank you. I'm very realistic. I'm very realistic about how it is. Yes. No, that's great. That's something to learn also for everyone. So thank you. And also with your due permission, we have Nitish ji also with us. So I would request him also to join in the conversation and also ask a few questions if that is okay. Yeah, हाँ sure. हाँ, of course. नहीं नहीं नहीं, नितिश आप नहीं पूछेंगे, मैं सिर्फ ज्योति के क्वेश्चन आंसर करूंगा. मैं काफी सारी Okay. बातें सर आपने बोली, कई सारी चीजें तो मैंने भी एक्सपीरियंस करी. मैं वो सोच रहा था, कुछ चीजें तो मेरी ही रिमाइंड हो रही थी कि करेक्ट. नहीं नहीं, मैं देख रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ, ये कॉर्ड जो है ये सही जगह लगा है. तो अच्छा, प्लीज प्लीज एक गो अहेड. सवाल है मेरा. एक सवाल, मैं बताइए. अक्सर ये देखता हूँ कि जो सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर्स हैं हम्म. और जो ट्रेडिशनल है, हाँ जी. उनका खुद का ये एक फाइट है अंदर से कि नहीं, हम्म. सेल्फ पब्लिशिंग जो ऑथर्स है, ये सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर्स टू बी करेक्ट, उनकी जर्नी अलग हो जाती है. अगर मैं ट्रेडिशनल होता तो मेरे अवार्ड्स होते, अवार्ड हम्म. अवार्ड हम्म. सेरेमनीज में मैं जाता, या हम्म. लेट फेस्ट में थोड़ा ज्यादा ट्रेडिशनल ऑथर्स को जो है हाँ. फेवर किया जाता है. तो करेक्ट. उनकी जर्नी का जो डिफरेंस है, ये परसीव्ड डिफरेंस है या जेन्युइन डिफरेंस है, या कितना सच में डिफरेंस है, वो थोड़ा सा अगर आप लाइटन कर पाए. श्योर. सो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है ये डेली चेंज होता है इंडस्ट्री में, बिकॉज पब्लिशर्स जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं, देखिए सेल्फ पब्लिशर्स के साथ तो मैं काम नहीं करता. वो इसलिए काम नहीं करता बिकॉज if you're getting an author a self publishing house, then what is your contribution as a literary agent? The author will tell me that यार ये काम तो मैं खुद भी कर लेता, पैसे देके मैं उनसे छपा लेता, उनके पैकेजेस ऑनलाइन मिल ही रहे हैं, तो आपने क्या उखाड़ा है. सो दैट इज दैट. But even with traditional publishers keep on changing their terms, what their expectations are from authors. So this difference can at times get blurred, that is there actually a difference in the actual working, or at times it can become too stark that हाँ एक difference है. So ये difference जो है टाइम के साथ चेंज होता रहता है. पहले इट्स नॉट स्टैटिक. ओके. I think the real difference is not with respect to what the author is thinking or what the publisher is thinking. The real difference is in the mind of the reader or the mind of the people who are around you. Hypothetical situation. आप एक पार्टी में जाते हैं और आप अपने कजन से मिलते हैं सपोज, ठीक है, और आप बोलते हैं कि देखिए मैं एक्स पब्लिशर से पब्लिश हुआ जो कि नोन पब्लिशर है फॉर सेल्फ पब्लिशिंग. उसके माइंड में सबसे पहले ये थॉट आएगा दैट वो सेल्फ पब्लिश की है, अच्छी नहीं होगी किताब, दैट्स व्हाई ही हैड टू सेल्फ पब्लिश, या किसी ने ली नहीं होगी इसलिए पैसे देके छपानी पड़ी. ठीक है. हो सकता है उस बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि होती हैं कई सारी बुक्स. Compare it with another situation where you meet your cousin and you say that, oh, my book has come out and my book has been taken up by X, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में. हो सकता है आपका कजिन फिर भी किताब ना पढ़े, ठीक है, क्योंकि उसको पढ़नी अच्छी नहीं लगती किताबें, बट उसके माइंड में होगा अरे यार इस पब्लिशर ने ली है, मस्ट बी अ वेरी गुड बुक. सो रेप्यूटेशनल डिफरेंस जो है वो, और जो परसेप्टिव डिफरेंस है सबसे ज्यादा वो आता है प्ले में. बहुत सारे अवार्ड्स हैं जहां पर आप बुक नहीं नॉमिनेट कर सकते अगर वो सेल्फ पब्लिश्ड होती है. बहुत सारे बुक स्टोर्स हैं कंट्री में जो सेल्फ पब्लिशिंग की बुक्स नहीं रखते. इन एनी सिनेरियो यू कैन प्रोबेबली नॉट कीप टू मेनी सेल्फ पब्लिशिंग बुक्स इन स्टोर्स ऑल्सो, बिकॉज जो सेल्फ पब्लिशर्स हैं वो प्रिंट रन करते ही नहीं है, दे डू प्रिंट ऑन डिमांड. जो ट्रेडिशनल पब्लिशर है वो प्रिंट रन निकालेगा, 1000 1100 2000 3000 कॉपीज का प्रिंट रन निकालेगा, राइट, तो तभी उनकी बुक्स अवेलेबल होंगी. बट ये चीजें हैं. So I feel that it's a difference of perception. So it's I think a lot of times authors also feel that doing quick work is doing good work, which I don't think is true. I always give this example. Doing fast work and doing good work are two different things. Yes, if good work can also be fast work, that's great. But I mean, if Shahid Afridi comes and bats and he hits a six on the first ball and he gets out on the second ball, his strike rate is of 300. So probably the match will end and he will have the highest strike rate. But runs कितने contribute करे उन्होंने? 6 run, which will probably be one of the lowest in the match.
So fast work is not good work at all times. And why I'm mentioning this is because there are people who come to me and say that sir मेरे को अगले हफ्ते छपवानी है किताब. मुझसे फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं. They'll be like मेरे को अगले हफ्ते छपवानी है. मेरा बर्थडे है. तो यार बर्थडे आपका अगले साल भी आएगा. अगले साल भी तो आएगा. तो अभी काम कर लो, अगले साल रिलीज कर. नहीं सर अभी करना है, ये करना है. So वो चीजें हैं. I mean then people learn with experience basically. See at the end of the day the reader is not interested in knowing that did it take you 5 years, 10 years or 1 year to get this book out. They will judge you on the basis of the final product that is there in their hand. That quality अच्छी है किताब की, pricing ठीक है, स्टोरी अच्छी है, कवर अपीलिंग है कि नहीं. दैट इज व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन. नॉट क्विक और फास्ट. वो सिर्फ ऑथर का है कि मैं जल्दी से निकालूं. वो एक होता है ऑब्वियसली बिकॉज यू रिटन इट, यू वांट इट आउट इन द वर्ल्ड. सो वो चीज है, बट दैट्स नॉट समथिंग दैट द रीडर इज वेटिंग फॉर. सो इफ यू कैन होन योर क्राफ्ट, लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल, my own example. When I wrote, so my first book was The Bear of Putras, and the second one was The Hunt for Rama's Bow. I had already finished writing. So my first book released in 2014. My second book on 10th May 2014. My second book released in December to January. So of January मान के चल लीजिए of 2017. Okay. When I started pitching my first book, The Bear of Putras, I had already finished writing my second book. So both the books were done by 2012, 2013. Okay. But I did not pitch my second book. Why? Because I knew that my first book has potential. And if I'm able to create a market for my book with the first one, you never know what will happen in your first because it's your first, right? People don't know your writing, they've not read you. But if you're able to create a market, then it will become that much easier for your second book to take off. So I waited. First book did very well. It was the #1 bestseller on Amazon and at other places for a very long time. I went to literary festivals. People got to know about me. And then I pitched my next book, and that was actually picked up by the publisher the very next day. Okay. And Home Books International took it up and they did a fabulous job with the book. And now also the book is in its fourth edition or whatever. They've done a very big edition, first edition. तो आजकल की अगर डेट में करते तो उसका फर्स्ट एडिशन आज के 4 एडिशंस 5 एडिशंस के बराबर था. सो आजकल पब्लिशर्स 1100, बहुत सारे लोग 1000-1100 के प्रिंट निकालते हैं. उसका फर्स्ट एडिशन 5000 या 6000 कॉपीज का था. उसके बाद भी इट्स गॉन इनटू मल्टीपल रन्स. सो दैट रीइंफोर्स माय बिलीव दैट be patient. Good things will take time because it is strategic also. You will also know the market better. The market will also know you better. It will become easier. So वो चीज है. तो फर्स्ट बुक पे मेहनत की बिल्कुल की. और I would say that people, friends, family, relatives, near and dear ones supported it a lot, because without their support you can't reach where you can initially, because nobody knows you or your writing. So again, very grateful, very thankful to them. We got huge pre-orders for the books, and I think that was very heartening. हाँ, तो बस ये है कि the point is that सही टाइम का वेट करिए, और वो आपको डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से सही टाइम क्या है. There is, if you see, there's also sizable gap in the release of both the books. वो भी important है, because what I have seen is that if there are people who bring out books very quickly, तो प्रोलिफिक तो बहुत है और उनकी सराहना भी होगी, but you are not giving readers adequate time to switch off and then switch on as far as you are concerned. So say अगर मैंने जनवरी में बुक लिखी और मैं ज्योति के पास जाऊंगा, बोलूंगा ज्योति मैंने बुक लिखी है, प्लीज खरीद लीजिए आप. ज्योति खरीद लेंगी, ठीक है. अब हो सकता है अगर मैं 2 साल बाद फिर जाऊँ ज्योति के पास कि ज्योति एक और बुक आई आपने लास्ट टाइम भी ली थी, प्लीज ले लीजिए, शील भी लिखा. बट अगर मैं जनवरी में जाऊंगा, फिर मैं उनके पास अप्रैल के अंदर जाऊंगा कि एक और बुक आई है मेरी, हो सकता है फिर भी ले लेंगी, ठीक है. अक्टूबर में जाऊंगा कि एक और आई है, बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ क्या है क्या नहीं. फिर उसके 2 महीने बाद जाऊंगा कि यार ये क्या है, पीछे पड़ गया यार, मेरे हर 2 महीने में आ जाता है मेरे से किताब खरीदवाने के लिए, ठीक है. दैट्स द ह्यूमन साइकोलॉजी. I mean, I'm just taking her example, but that's the truth. You need to know what your reader is, ना. Once, twice, thrice कर लेगा, फिर बोलेगा यार हर 2 मिनट में आ जाते हैं यार ये लोग, तो आपको ग्रेजुअल डिप दिखने लगेगा.
So you have to space it out. So again, it is not speed, but strategy, quality that will take you far. Or so I believe. Or so I believe. मेरा एक I think सवाल ये that's भी है कि अक्सर लिटरेरी एजेंट्स का ये रहता है कि वी आर एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर जॉनर ऑफ हम्म कंटेंट। तो आपका क्या है स्पेसिफिक, ऐसा कुछ है कि नहीं मेरा अगर ये मतलब ये जॉनर का है तो मैं मतलब ज्यादा नहीं नहीं नहीं, ऐसा फेवरेबल कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स है. रहेगा मेरा, या देर जैसे इज, मैक्सिमम को मैं देखता हूँ हाँ, कि दैट्स ट्रू. व्हाट यू सेइंग इज शॉर्ट ट्रू. स्टोरी कलेक्शंस में लेता ही नहीं। हम्म. आपने अपनी पिचिंग की बात करी, जब अपने पहले जब मैं खुद के लिए पिच कर रहा था एजेंट्स को, हाँ नेशनल और जी. इंटरनेशनल को, 90% जो थे उन्होंने कहा कि हम शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लेते ही नहीं। मैंने कहा ये बढ़िया गेम है, आप जब लेते ही नहीं तो कंसिडर कैसे करोगे? सो आपका भी है कुछ ऐसा? सो सी, देर आर टू थिंग्स. पहली चीज, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर वन. नंबर टू ये है दैट देर आर सम जॉनर्स विच पब्लिशर्स विल नॉट टेक टू मच. सो इसलिए कुछ लिटरी एजेंसीज हैं जो वो नहीं लेती है, क्योंकि दो रीजन है इसके. देखिए, हो सकता है वो काम कर रहे हो 7 8 10 लोगों के साथ इंडस्ट्री में, ठीक है. और अगर आप साल में देखेंगे तो उनकी किताबें आती हैं उन 8 10 पब्लिशर्स के साथ, साल में से 20 किताबें, 25 किताबें, 30 किताबें, अगर उन्होंने उतनी की. कई सारे बहुत कम भी करते हैं, कुछ हैं ऐसे जो बोलते हैं कि 90% हम नहीं लेते हैं किताबें जो हमें सबमिट होती है. दे एक्चुअली, सॉरी, एम आई ऑडिबल? या यू ऑर्डर. हाँ, they actually flaunt that we have a 90% rejection rate और 95% rejection rate, कई इन्होंने तो मेंशन भी कर रखा है वेबसाइट पे, बाय द करेक्ट. वे। सो अगर वो 30 40 कर रहे हैं तो क्या है कि वहां पे उनको दिखेगा कि भाई हमने इतनी किताबें ए के साथ की, इतनी किताबें बी के साथ की, इतनी किताबें सी के साथ की. इन आर केस वी विल डू, हम भी उतनी ही किताबें करते हैं उन लोगों के साथ जितनी वो कर रहे हैं, ठीक है, विद द बिगर गाइस. बट हम और भी लोगों के साथ काम करते हैं. हम और भी लोगों के साथ काम करते हैं, तो हम साल में 250, 271, 200+, 170, जो भी है, जो भी नंबर है, ठीक है, वो नंबर्स अचीव करते हैं. सो हो सकता है आपको लगे कि अच्छा, हो सकता है Suhail is working with A publisher more than B. So my answer to you is that no, you compare me with another literary agency, the number of books that they have sold to the biggest publisher, I've also sold the same number, if not more, maybe नंबर देते हैं। in the same. But because I'm doing 100 other books, the frequency of me announcing that to you is a little lesser. Okay, that's that. And why are we doing more? Simply because we know more publishers and we believe that every publisher wants to do something good. So मैं ये हायरार्की में मानता ही नहीं हूँ यार. अगर अगर मैं एक न्यू पब्लिशर हूँ, ठीक है, मैं एस्टैब्लिश नेम कब बनूंगा? जब मैं काम करूंगा. अगर मेरे को कोई काम ही नहीं देगा तो मैं कभी एस्टैब्लिश नहीं बन पाऊंगा. या करेक्ट। जो आज के एस्टैब्लिश पब्लिशर्स हैं वो भी तो कभी न्यू पब्लिशर्स हुए होंगे. Penguin or a Rupa would have also had their first year in publishing, right? They might be in their 50th year, 100th year right now, but they must have also had their first year in publishing, right? So अगर किसी का फर्स्ट ईयर ही नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? नंबर वन. दूसरी चीज ये है दैट यू हैव टू डिसाइड इफ द टॉप 10 आर नॉट टेकिंग शॉर्ट स्टोरीज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा, तो मैं एक एग्जाम्पल बस दे रहा हूं. तो अगर मैं बोल दूं कि नहीं यार ये 10 तो नहीं ले रहे, तो मैं आपकी बुक नहीं ले रहा, नो, देन व्हाट इज माय रोल? मेरा रोल ये है कि अगर वो 10 नहीं ले रहे तो मैं देखूं कि 11 से 20 में ले रहा है कोई. उधर ढूंढू कौन है जो शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश कर रहा है, उस जने को ढूंढू. and I say that look, this person, this publisher is the best publisher for your book because he believes in your vision. What will I do if the biggest publisher of the country turns down your book? I mean, that's over and done with. I can't put a gun to their head and say, no, 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 take it because the author wants. तो वो बोलेंगे भाई हमारे साथ तो सभी काम करना चाहते हैं, तो हम डिसाइड करेंगे हम किसके साथ काम करना चाहते हैं. फेयर है बिल्कुल वो बात. सो बट अगर कोई आके बोलता है कि यार ये किताब जो इस लड़के ने लिखी है ना बहुत अच्छी है, मेरे को इसकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगी, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट आउट, सो दैट पब्लिशर इज द बेस्ट पब्लिशर फॉर दैट पर्टिकुलर बुक because he believes in the writing, he believes in the story, he believes in the author. So I personally feel केस टू केस बेसिस पे ये डिसाइड होना चाहिए कि कौन पब्लिशर किस बुक के लिए अच्छा है. और ये चीज तो है ही दैट एज ऑफ टुडे a lot of publishers who are younger
who are younger, are more adaptive to bringing out fiction books, or are more open to signing up new authors. There could be various reasons. There could be that, okay, their print runs might be lesser, so it becomes easier for them to do so. Bigger publishers have bigger print runs, so they have to see whether that book will sell that much or not. So, वो considerations अपनी जगह हैं. But I'm just saying that they're at least providing a platform, to those people to do something good, and maybe who knows that when they do their next book, the bigger publishers also take them up. ऐसा हुआ ही है. बहुत सारे जो चेतन भगत से इंस्पायर्ड ऑथर्स थे, 8-10 हमारी कंट्री में हैं, जो कि अब काफी बड़े नेम्स हैं ऑन देयर ओन. यू नो हु दोस 8-10 पीपल आर. दे स्टार्टेड ऑफ with a different publisher, and I mean, kudos to that publisher. Actually, I don't want to get too much into it, but they did phenomenal business, and then the bigger guys came and said that, guys, sign up with us. So the point is that kudos to the one who gave them an opportunity first time around. They recognized their talent when nobody had seen their talent. The bigger people said that, okay, we have the money, we have the might, we have the distribution, we have recognized that you are a talent now when you've established yourself, right? So वो वाली चीज है. बेसिक चीज ये है कि आप अगर रणवीर सिंह हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आदित्य चोपड़ा ने आपको बनाया है कि संजय लीला बंसाली ने आपको बनाया है. ठीक है, क्योंकि संजय लीला बंसाली ने आपको अलाउद्दीन भी बनाया है, और आपको बाजीराव भी बनाया है, और राम भी बनाया है. लेकिन क्या वो आपको इन तीनों में से कुछ भी बनाते अगर आदित्य चोपड़ा आपके लिए बैंड बाजा बारात नहीं बनाते, या आपको लेते नहीं? कन्वेंशनली गुड लुकिंग हीरोज में नहीं है वो, राइट? ही इज अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, बट वो चीज है. सो वही पब्लिशिंग के साथ है. सो या, आई एम जस्ट गिविंग अ कॉन्टेक्स्ट टू इट. ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर सजेशन, जैसा कि हम कहते हैं एस्पायरिंग ऑथर्स जो हैं, जो नए लड़के आना चाहते हैं राइटिंग में और पिच करना चाहते हैं कि भाई, तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि नए लड़कों के साथ नई लड़कियों को भी आना चाहिए. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब जेंडर्स को बोले कि भाई आप लिखिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जेंडर बाउंड नहीं है. ठीक है, अच्छा, अब आगे बताइए. तो मेरा वही सवाल था कि जो नए बच्चे बच्चियां हैं, उनको हाँ, आपका क्या एक सजेशन होगा या क्या एडवाइस होगा, जो राइटिंग में आना चाहते हैं, आइदर आउट ऑफ पैशन और आइदर ऑफ मेकिंग अ करियर? हम उस पर तो काफी देखिए, हाँ, कर ही लिया है. तो देखिए, ऐसा है कि नए राइटर, जो जब मैं बोलता हूँ नए राइटर ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि नए राइटर दो तरह से हो सकते हैं. एक हो सकता है एक्सपीरियंस के मामले में, दूसरा हो सकता है एज के मामले में. बिकॉज आई यूज्ड टू ऑलवेज जोक दैट माय यंगेस्ट ऑथर वाज अ 90-year-old man who debuted with us. So he wrote his first book when he was 90 years of age. So he's a new author only. He's a new author, but he's 90 years of age. And my oldest author was a 13-year-old girl, and I have two of them, one from India, one from Pakistan. Few years ago, we had done those books. ये मैं clarify कर दूं कि बहुत साल पहले किया था, कई लोग उत्तेजित ना हो जाए. अभी बहुत साल हो गए हैं, 6-8 साल हो चुके हैं इस बात को. तो खैर, बट द पॉइंट इज दैट टैलेंट की कोई एज नहीं है, टैलेंट की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है. आपको इससे ये बात पता लगती है. तो बोलना मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि अगर आप किताब लिख रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज याद रखें कि आप अपनी किताब रिप्रेजेंट कराएं द बुक मेकर्स से. सो ये मेरी एडवाइस है बेसिकली. ठीक है, सो THEBOOKBAKERS thebookmakers@gmail.com पे आप भेजिए, और आप लिखिएगा कि आपने ये कॉन्वर्सेशन सुनी थी नितेश और ज्योति के साथ, और फिर हम उस पर जरूर कुछ जल्दी से आपको रिप्लाई देंगे. सो ये मेरी एडवाइस है बेसिकली. और लिखते रहिए जब तक नई कहानियां नहीं आएंगी. सी, आई ऑलवेज से दैट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव इन एज पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर इज द गिफ्ट ऑफ अ स्टोरी. That is the greatest gift you can give. So do that. If you have the talent and passion, take out time and do so. Okay, so I think Jyoti ma'am, Yes, thank you so much. I know it has been a long discussion, but we still want to know so much. And if the time allows, Nitish ji, I have two quick questions, if sure, that is okay. Yeah. So I'll go with the first one. ये जो हमने बहुत देर तक, और आपने भी बताया, ये बुक टू स्क्रीन एडेप्टेशंस की जो हम बात करते हैं, तो how important is the
role of how important has been the role of book to screen adaptation in bridging the gap between writers, publishing industry, and the popularity of Bollywood that we say. So again, see, I never sugarcoat any answer. Yeah, okay. So I mean, I'm sure. So the point is that people might get slightly demoralized, maybe. But the point is that it's not about demoralize. It's the point about telling them what the truth is. You know, हम लोगों की आदतें generally, not literary field में generally, that हम बहुत हंसी खुशी इन्फ्लेटेड चीजें बताते हैं कि इलेक्शन होने वाला है तो पॉलिटिशियन बोलेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, चाहे वो कर पाए या नहीं कर पाए। अगर वो बोल देगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो उसको वोट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, वो ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट कैसे होगा फिर इंसान की कि आप वो नहीं करें। बट ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, सी आई थिंक द ओटीटी बबल और द, and I have known this even before the OTTs were here, because I've sold books to producers even before the OTTs came. I was working with the Z network, as I told you. तो मेरे ही ऑफिस में, मेरी फ्लोर पे Z5 बैठता था जब Z5 का एक भी शो स्टार्ट नहीं हुआ था। their first show was Karanjeet, which was based on the life of Sunny Leone. और वहां पर उसके प्रमोशंस और ये सब चल रहे थे। तो उस शो के जो प्रोड्यूसर्स थे, दे कनेक्टेड विद मी एंड हमने कुछ आगे काम किया। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने मैदान भी प्रोड्यूस की, जो अजय देवगन की पिक्चर आई थी रिसेंटली बोनी कपूर जी के साथ। और उन्होंने हमारे साथ भी कुछ काम किया, कुछ हमारी बुक्स ली। सो मैं तब से जानता हूँ इस ओटीटी फील्ड को टिल व्हाट इट इज टुडे। और रिसेंट एग्जांपल में दूं तो very happy and proud to tell you that abhi Rani Mukherjee won the national award, a few days ago for Mrs. Chatterjee versus Norway, and that film is based on my author's book, and we sold the book to Mr. Nikhil Advani's company. So वो भी है। So I've seen the spectrum, but मुझे ऐसा लगता है that the OTT was a bubble and it had to burst sometime. And I think the bubble has burst. ViewClip was a platform which has shut down. Okay. If you see, say, Z5, you will see a marked difference in the number of originals that they used to do vis-a-vis the number of originals that they are doing right now. Right. So it could be part of a strategy, but I am, as a viewer and an, so I know the inside stories also, but I'm just saying as a viewer, अगर मैं analyze करूं that अच्छा ये पहले साल में 15 वेब सीरीज कर रहे थे, अब ये साल में 2 वेब सीरीज कर रहे हैं सपोज। सो एक वो चीज है। तीसरी चीज ये है that Voot, Hotstar and Jio are now one entity। ठीक है, तो 3 की जगह 1 हो गए हो, तो आपका एक प्लेटफॉर्म बचा आपके पास Amazon, नेटफ्लिक्स एंड सोनी लिव। सोनी लिव भी साल में बहुत ज्यादा वेब सीरीज नहीं करता, 4-5 करते होंगे वो शायद। ठीक है, so the point is that producers were very excited about all of this, and now you need to also realize and understand that in these so many years, see, so many years means it's been around 5 years since all these OTTs have been there at least, right? And every year they're churning out a lot of content. How many of these shows that they've made have been based on books? Hardly. आपको अभी आप गिनने बैठोगे, आप 10 गिन लोगे, 10 गिन लोगे आप, ठीक है। बट 10 out of 700, 600, 800, what is the percentage? That's very low percentage. So अगर आप वही चीज हॉलीवुड में देखेंगे तो उनकी हर एक थ्रिलर फिल्म, हर एक फैंटेसी मूवी, हर एक माइथोलॉजिकल बुक पे ही बेस्ड होती है, बुक पे ही बेस्ड होती है। फिर वो जैक रीचर हो या हैरी पॉटर हो या पर्सी जैक्सन हो या जेम्स बॉन्ड हो, all of them are based on books. They're literary personalities, literary characters. So, and that percolates on their OTT also. यहाँ पर करना चाहा लोगों ने, लेकिन पता नहीं शायद जो लोग बैठे हैं OTTs में, या फिर हाँ मेरे ख्याल से वही है, because producers, to give producers their due, a lot of producers reached out and they used to do XYZ things and that we'll pitch here and pitch there, but अगर वो नहीं आया तो क्यों नहीं आया? ऐसा तो नहीं है that the producer has no skill in pitching.
but the OTTs want to play risk free or whatever the case is. So I think वो एक market है which needs to be seen. Where the producers really need to step up is when they are making films. मुझे ये जरूर लगता है that Bollywood के जो film makers हैं, they are very they're averse to risk. They're averse to risk. Very simply, if you see the southern industry, it's a regional industry. ठीक है? They are making the biggest of movies in terms of budgets also. फिर वो देखिए जब बाहुबली 1 बनी थी तो उन्होंने ऑलरेडी बाहुबली 2 के बारे में प्लान करके रखा हुआ था, उनको थोड़ी पता था कैसे करेगी बाहुबली 1। जब बाहुबली 1 बनी थी इट वाज अ रीजनल फिल्म ओनली, it just happened that it catapulted to another level of success, right? So that's that. But why did Bollywood never make it? A regional industry has 1/5 the budget on most occasions than what your Bollywood producers would be having. But they showed the vision. They showed the vision, making something grand. अभी भी एक बहुत ही amazing mythological animation आई है जो मैंने 2-3 बार देखी है और उसका मेरे को म्यूजिक भी बहुत पसंद है. इट्स अ फिल्म कॉल्ड महाअवतार नरसिम्हा, right? That is a film also that has been, I think, made in Hyderabad. That's a film from one of the production houses in Hyderabad. Why did Bollywood never make? Bollywood has made animated films here or there, but why not something like this, which is 3D graphic? So अब मैं पढ़ रहा हूँ कि so and so is announcing this and so and so is announcing. तो ये वो भेड़चाल वाली चीज है कि अगर एक हॉरर कॉमेडी हिट हो जाती है तो सब बोलेंगे हमें हॉरर कॉमेडी दो, विदाउट रियलाइजिंग कि जब तक वो हॉरर कॉमेडी आएगी तब तक 5 और आ चुकी होंगी, तो फटीग फैक्टर आ गया होगा. या फिर जो बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री है, इट इज अ इंडस्ट्री वेयर दे हैव वेरी लो बजट्स. मतलब आप उनकी मूवीज देखोगे तो आपको लगेगा कि इनके पास बाकी कुछ पैसे नहीं है व्हेन दे आर मेकिंग, बट देयर स्टोरीज आर गुड स्टोरीज. फॉर एग्जांपल, लाइक दे विल मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट व्हिच इज लाइक हाउ डैन ब्राउन बुक्स आर, दैट वो कुछ मतलब जैसे कुछ हो गया कि मान लीजिए कि शाहजहां का कोई ट्रेजर था, उसमें एक स्वॉर्ड थी उनकी जो कहीं छुपी हुई है एंड इट इज वर्थ बिलियंस बट इट इज हिडन इन सम एंशियंट ओल्ड हाउस, डिलैपिडेटेड हाउस इन कैलकाटा, जो उन्हें ढूंढना है. तो हाँ, वो ऐसा नहीं है कि वो लंदन से कोपनहेगन, कोपनहेगन से पेरिस और पेरिस से यू नो आबू धाबी जा रहे हैं, जैसे ऐसी मल्टीपल फिल्म्स में होता है. वो कैलकाटा के अंदर ही खेल रहे हैं, ज्यादातर उनकी 50% शूटिंग है घर के अंदर ही हो रही है, वो ढूंढ रहे हैं उसको. तो आपको पता लग रहा है कि बजट नहीं है, लेकिन स्टोरी तो है उनके पास. एटलीस्ट उनको ये तो है कि चलो कुछ अच्छी स्टोरी है, लेट्स मेक दैट. इन बॉलीवुड इट इज नेवर अबाउट द स्टोरी, इट्स जस्ट अबाउट हु द फिल्म स्टार इज. हु द फिल्म स्टार इज. आप यहाँ पर अगर माइथोलॉजिकल लेके जाए, आप यहाँ पे हिस्टोरिकल लेके जाए, आप यहाँ पे फैंटेसी लेके जाए, वो बोलेंगे यार बजट बहुत है, बजट बहुत है. तो बजट तो यहाँ भी है ना. साउथ वाले फिल्म मेकर्स कैसे बना रहे हैं उसको, और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं. सिर्फ बाहुबली इज नॉट द लोन एग्जाम्पल. कंतारा इज देयर, पुष्पा इज देयर, हनुमान, एक हनुमान बनाई थी उन्होंने, राइट? वो थी. फिर आई थिंक कार्तिकेय 1 and 2 भी आई थी, वो उस लाइन्स पे थी, द्वारका से रिलेटेड थी सेकंड वाली. सो ये सब पिक्चर्स आई हैं, पिक्चर्स ने अच्छा किया. व्हाई हैज बॉलीवुड नेवर मेड द ओनली पिक्चर, वन पिक्चर दैट बॉलीवुड हैज मेड इन रीसेंट टाइम्स, ब्रह्मास्त्र. दैट्स द ओनली वन व्हिच फॉल्स अंडर दिस ब्रैकेट. इट्स ओनली वन. बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी नक्षत्र, विवेक ओबरॉय और सनी देओल की, जो वो इस जोन में थी, लेकिन ट्रीटमेंट की वजह से शायद नहीं चली. बट सो आई थिंक यहाँ पर द बॉलीवुड पीपल नीड टू शो मोर enthusiasm, because if you don't try it, you'll never know whether it will succeed or not. Right. As you said, story, enthusiasm, out of the box, and risk taking is zaruri hai. So thank you for that. And a last question, quick, because we are on the platform of Let's Inspire Bihar, a revolutionary campaign initiated by Bihar's popular officer IPS Vikas Vaibhav, who is uh, working hard towards reinstating the past glory of the state. So what are your thoughts about role of literature in driving any social change? So first of all, my heartiest congratulations to Mr. Weber for coming up with this initiative, and of course the two of you who are taking that forward. See, I'm always for regional literature.
सो देखिए, जब अगर हम स्पेसिफिकली बिहार की बात करें, सो बिहार इज द क्रेडल ऑफ literature and literary works, because the biggest storage of literary works, not only from entire India but the world at large, was stored in Nalanda, right, which is in Bihar. So अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो बिहार के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा उसको महत्व दिया हुआ है. सो इट्स वेरी गुड, लाइक which is why, Jyoti, I liked the word that you used. You said something to the effect that he is trying to bring back the past glory of literature in Bihar. So we can only bring back past glory when we realize that it has become a thing of the past. If there is no realization, then you cannot improve upon it. And you can only improve upon it if you take inspiration from something that has happened in the past. So Nalanda for me is that one inspiration, major inspiration, from which it, and Nalanda is India's, यार, is India's. मतलब हम सब इंडिया में नालंदा को बोलते हैं कि नालंदा इज दैट वन प्लेस. वो बर्न हो गई और उसमें इतना रिपोजिटरी ऑफ लिटरेचर था जो चला गया, जो शायद इतने सारे लोगों को ज्ञान दे सकता था. सो वो चीज है. तो मैं तो हमेशा इनफैक्ट यही बोलता हूँ दैट यूपी एंड बिहार, शिल्पा शेट्टी ने तो जो फेमस किया है वो तो किया ही है, बट मच मलाइंड, दीज टू स्टेट्स आर मच मलाइंड. ये यूपी बिहार में मतलब क्या होगा, मैं मतलब आप अगर देखें तो इंडियन हिस्ट्री इतनी वाइड है. सिर्फ दो रूलर हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में जिनको द ग्रेट की उपाधि दी है. द एपिथेट ऑफ द ग्रेट हैज बीन गिवन ओनली टू. One is Ashok, the other is Akbar. One ruled in Bihar, the other ruled in UP. Right? So यूपी जो इंडिया के ग्रेटेस्ट रूलर्स हैं वो भी यूपी बिहार से आए हैं हिस्टोरिकली. तो ये सोचने वाली बात है. ठीक है. सो मुझे लगता है दैट इट इज ग्रेट दैट लिटरेचर, रीजनल लिटरेचर इज बीइंग ब्रॉट टू द फोर, बिकॉज रीजनल लिटरेचर में जो ब्यूटी है वो ये है दैट ऑल रीजनल लिटरेचर इन इंडिया, और एटलीस्ट 90% ऑफ रीजनल लिटरेचर इन इंडिया has come about before the advent of English in India. When did the advent of English come in India? When the Britishers came here, right? Which is from say 1600s onwards, or then gradually from the 1700s when they started settling down over here. But जो हमारी भाषाएं हैं वो तो कब से चली आ रही हैं. वो तो हजार एडी, हजार एडी में भी थी, बीसी में भी थी. ठीक है. सम्राट अशोक जब बात करते होंगे तो वो बात करते होंगे ना किसी लैंग्वेज के अंदर. मतलब हमको पता है कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, बट इट्स जस्ट वे. तो उस टाइम भी बुक्स लिखी गई थी, राइट. सो सो रीजनल लिटरेचर को की जो ग्रेटनेस है, वैल्यू है, वो टाइम्स इमेमोरियल है. जो उसका डिसएडवांटेज है, लेकिन वही उसकी चैलेंजिंग ब्यूटी है, विच आई लुक एट, इज दैट बहुत बढ़िया वर्क्स हैं जो क्योंकि रीजनली लिखे हैं इसलिए आउट ऑफ द स्टेट नहीं गए हैं वो. फिर वो चाहे बंगाली में लिखे हुए हो, ठीक है, कि मतलब बंगाल के अंदर लिखे गए हो, या तमिलनाडु में लिखे गए हो, या कहीं भी लिखे गए हो, लेकिन अगर अब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बाहर ले आए, it can reach a whole new generation. And we are doing some amazing work. I mean, one of our authors, Mr. Nalin Verma, we did a book with him called The Greatest Folk Stories from Bihar. So we brought out folk stories which were not known to people outside Bihar. The book did really well. It was published by Rupa. We're doing a new series on that with Home Books International. And recently we've done a book, on the stories from Saint Gorakhnath ji, with Nalin sir, and of course one of the biggest and most well-known personalities of Bihar, Shri Lalu Prasad Yadav ji, who's also our author. So I think regional literature. So मतलब what I'm trying to say is that I walk the talk. सिर्फ यहाँ पे बैठ के बोलने से कि करना चाहिए नहीं होता, आपको करना भी पड़ता है. तो मैं जब भी कुछ चीज के बारे में बोलता हूँ तो मैं उस पर एग्जाम्पल देता हूँ. अगर मैंने नहीं किया तो मैं बोलूंगा कि हाँ करने की इच्छा है, बट हमने किया भी है और हम और भी इसमें कर रहे हैं. वन ऑफ द स्टेट्स वेयर आई हैव टेकन आउट द मैक्सिमम लिटरेचर फ्रॉम इज बंगाल. बंगाल की बहुत सारा लिटरेचर है जो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और अभी हमने कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी बेचा है. Probably one of them to the biggest platform in the country.
ओके, सो वो चीज तो लिखी गई थी 1700s में, लेकिन हमने उसको 2025 2026 में हम लाए हैं। तो हमने उस बुक को बेसिकली 500 600 साल बाद भी अलाइव रखा है। वो ग्रेटनेस है लिटरेचर की। ओटीटी बने ना बने, दैट इज ओके। ग्रेटनेस इज दैट टुडेज जनरेशन विल नो दैट अच्छा ये चीज आज से 700 साल 800 साल 1200 साल पहले लिखी गई थी। 100 साल पहले भी लिखी गई हो सकती है, बिकॉज कॉपीराइट इज ऑफ 60 years, बट है ऐसी चीजें जो रीजनल थी लेकिन अभी तक आई नहीं। सो आई एम ऑल फॉर इट, एंड आई थिंक दैट इट इज समथिंग दैट इज ग्रेट that you guys are doing. I think you're also planning something on a bigger scale in terms of a literary festival in the coming year, and I'd be more than happy to associate in every which way possible, because I do feel that there is immense talent and potential in the state, and stories are not dependent on the language. Stories dependent on, again, क्रिएटिविटी एंड माइंड। भाषा आपकी कुछ भी हो, आप उसको ट्रांसलेट कराइए, आप उसको और पब्लिशर्स को दीजिए। सो आई थिंक इट विल बी अ गुड इनिशिएटिव, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम वेरी एक्साइटिंग स्टफ। आई थिंक यू विद द टू ऑफ यू एंड मिस्टर वैभव एट द हेल्म, things look exciting, because all three of you come with a vast experience in literature by yourself. I mean, Jyoti, you have written several books which have done well, and Nitish has been very closely associated. He does a fabulous job in unearthing talent through his magazine also, and promoting authors. So I think when people like these join in, that the objective is noble. So जहाँ पर noble objective होता है, वहाँ पर results eventually come in. So would like to wish all the very best to all of you, and more than happy to be associated in any and every way possible. Thank you so much. Holding on to that beautiful thought and your best wishes. And thanking you for your precious time, because despite your busy schedule that you have packed, jam-packed, so giving us so much of your time. Thank you so much It's a for being pleasure. on this platform. And Thank you so thank you much. for encouraging us so much. And we look forward to all the collaborations and working together All right. Thank you ahead. so much. Thank you, Yes. Jyoti. Thank you, Thank Nitish. you. It was a Thank you. pleasure being Thank you, here. ma'am. Looking forward. Cheers. Thank you. Sure. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you so Bye. much. Thank you.